सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का सबसे पहला प्रैक्टिकल है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोस्कोप। सो ये आपका ऑस्पी में भी आ जाता है और इसके डिफरेंट पार्ट्स पे जो है आपका लगा होता है एक मार्किंग लगी होती है एंड दे आस्क यू कि ये कौन सी चीज़ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू ऑल द कंपोनेंट्स। फर्स्टली यू कैन सी दिस इज़ द बेस जिसके ज़रिए उसको हमने टेबल पे रखा है। देन दिस वन इज़ द पिलर और पीछे की साइड पे इसका हैंडल होता है फ्रॉम विच वी होल्ड इट। अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग दैट वी सी इज़ द स्टेज। अब स्टेज भी दो तरह की होती है, एक फिक्स स्टेज है जिसके अंदर ये होल है जिसमें से लाइट आएगी एंड अदर इज़ द मूवेबल स्टेज जो ये हमारे पास मेटल फ्रेम नज़र आ रहा है जिसके ऊपर हम स्लाइड लगाएंगे एंड द स्लाइड वुड मूव हेयर एंड देयर। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज़ फोकस। सो वी हैव द फाइन फोकस। फाइन फोकस का मतलब ये है कि ये चीज़ को आगे पीछे ऊपर नीचे कर लेता है लेकिन बहुत स्लो स्पीड से, सो दैट वी कैन फाइन फोकस ऑन like small objects, and coarse focus is like it moves your lens up and down very rapidly so that you can quickly have access to the movement. Then we have this much thing which is an eyepiece, and eyepiece में भी दो components हैं, where is this is the eye lens and नीचे की side पे there is a field lens. Then we have the nose piece. Nose piece यहाँ पे है जिसके ऊपर different objective lens लगी हुई हैं, and these objective lens they have different type of you can say magnification powers like 4x 8x 10x etc. And then we have this lamp over here. अब ये लैम्प से फॉर एग्जांपल इफ़ योर माइक्रोस्कोप इज़ the one which works on electricity, so you will switch on through this power switch and light will start to show up. But in some microscopes there is another mirror as well which focuses the light from the outside source towards this lamp and from this source into the slide through this aperture in the fixed stage. ये भी हमारे पास चीज़ होगी, यही चीज़ें वो पूछ सकते हैं आपसे. नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स सम क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो नोज पीस के ऊपर लगी होती हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंसेज आर देयर. सो देयर इज़ लो पावर जिसकी 10 टाइम्स पावर होती है एंड उसके न्यूमेरिकल अपर्चर इज़ लेस देन दैट ऑफ द कंडेंसर. दिस शुड बी रिमेंबर्ड. एंड हाई पावर ऑब्जेक्टिव उसकी 45 टाइम्स होती है एंड उसका न्यूमेरिकल अपर्चर इज़ इक्वल टू or less than that of condenser. And oil immersion objective lens इसकी 100 times magnification होती है and the aperture is very large. Numerical aperture is always greater than the condenser. Also इसमें हम oil यूज़ करते हैं जो कि cedar oil होता है etc. ताकि उसकी जो magnification है या numerical aperture है उसको further increase किया जा सके. अब जो ऑयल इमर्जन लेंस है दैट विल बी यूज टू स्टडी रेड ब्लड सेल एंड टिश्यू मॉर्फोलॉजी बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल एंड वी नीड सर्टन large objective lens magnification powers so that we can focus on red blood cells and as well as the tissue morphology. देन एक और चीज़ हम देख लेते हैं विच इज़ दिस कंडेंसर. कंडेंसर के नीचे आपके पास एक आयरस डायाफ्राम होता है विच एक्चुअली फोकसेस द लाइट टुवर्ड्स दिस फिक्स स्टेज अपर्चर ताकि वो उसको स्लाइड जहाँ पे लगी हुई है उसके ऊपर फोकस कर सके. नाउ ऑल्सो वी हैव सर्टेन प्रिकॉशंस, और ये जो प्रिकॉशंस है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट cover the microscope with plastic cover after use, and also इसको जो है हमने इसकी स्लाइड के ऊपर you do not have to touch with your fingers and do not blow in it and make sure that it is dry and free of dust, because if there is dust then we will see artifacts. Artifacts are something that are not of our use लेकिन वो हमारी लेंस में फिर भी आ जाती हैं, वो डस्ट और डर्ट पार्टिकल्स ही होते हैं. इतनी सी प्रिकॉशंस बस आनी चाहिए. एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट आर दीज क्वेश्चंस जो वाइवा में पूछे जा सकते हैं. फर्स्ट वाइवा में भी और ऑस्पी में भी, ऑस्पी का जो ऑब्जर्व स्टेशन होता है उसमें भी पूछ सकते हैं. फॉर एग्जांपल वाई इज़ योर माइक्रोस्कोप कॉल्ड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बिकॉज हमें पता है कि उसमें 2 लेंसेज है, एक आई पीस वाली है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस जो नोज पीस पे लगा हुआ है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. और इसमें इमेज जो प्रोड्यूस होती है दैट इज़ आई पीस पे जो प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. और जो ऑब्जेक्टिव में प्रोड्यूस होती है दैट इज़ रियल, inverted and magnified. And why does oil immersion lens have a pin size hole aperture? And the aperture being very small allows the central core of light to pass through, and main thing इसकी यही है refraction को कम करने के लिए, to reduce the refraction which will cause distortion in the image.
Then the next question is, what is the reason for selecting an oil immersion lens? First of all, we know that oil immersion lens जो है उसका magnification 100 times होती है, so that we can focus on red blood cells etc. And जो उसके दरमियान स्लाइड एंड माइक्रोस्कोप की लेंस के दरमियान जो चीज़ रहती है ऑब्जेक्टिव लेंस और ग्लास स्लाइड के दरमियान, दैट इज़ ओनली अ लेयर ऑफ ऑयल, एंड इफ़ देयर इज़ नो ऑयल देन द image will be blurred and it will be faint. Now, what should be the position of the condenser with why should the position of the condenser be low with low power and high with oil immersion lens? The main thing is that since it depends upon the numerical aperture. Aperture of low power lens is wide, so we have its position as low, whereas the high power lens, that is oil immersion lens, it has a small aperture, so it has a pinhole size aperture, so we need to have the highest position with this type of thing so that a single beam of light can pass through it. It has a small aperture and a single beam of light should be available to it so that we can clearly see the image. एंड नाउ डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इल्यूमिनेशन क्यों रिक्वायर्ड होती हैं, डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इल्यूमिनेशन क्लैरिटी ऑफ इमेज के लिए और ऑप्टिमल आइडियल अमाउंट ताकि उसमें से गुजरे एंड वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स एंड द थिंग अंडर व्यू वेरी क्लियरली. एंड वट इज़ मेंट बाय रैकिंग द माइक्रोस्कोप एंड वट इज़ इट्स इंपॉर्टेंट, वी नो कि हमारे जो सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स पड़े हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे पड़े हैं एज इट्स अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. सो to see all the stuff which are present at different level, we use the racking mechanism. Racking is कि कभी हम उसको ऊपर करते कभी नीचे करते हैं. That is why we can see all the entities which are present inside the cell. Thank you very much. And ये हमारा microscope वाला हो गया complete.